हेलो फ्रेंड्स, हम आरो के पिछले साल वाला पेपर देख रहे हैं जो लीक हो गया था। हमने 70 क्वेश्चन तक लगभग कंप्लीट कर लिया था, अब 71 से करना था। ये रीजनिंग का एक क्वेश्चन है। फ्रॉम द हाउस ऑफ लोकेश went 15 किलोमीटर टू नॉर्थ, then he turns west and covered 10 kilometers, then he turns south, covered 5 kilometers, finally turns east, he covered 10 kilometers. In which directions from his house? So इनिशियल पॉइंट ये था, आप देख सकते हैं 15 किलोमीटर जानता है, फिर उसके बाद टर्न हो जाता है 10 किलोमीटर जाता है, 10 टर्न होकर साउथ में फिर 5 किलोमीटर आता है, फाइनली टर्न करता है ईस्ट में। एंड द डायरेक्शंस ऑफ द हाउस कितने किलोमीटर रह गया, तो डायरेक्शन बताना था, तो इसका डायरेक्शंस तो नॉर्थ हो गया। हैज़ नाउ लोकेस इन द नॉर्थ डायरेक्शंस। Seventy-two questions given below are two statements in which label and assertions and other as reasons. Significant technicals and institutions reforms in the Indian agricultures are required to feeding the growing populations. Reason: a significant number of farmers in many parts of India still rely on the monsoon rains and natural soil fertility for agriculture. So ऑप्शन डी सही होगा। ए और बी दोनों ट्रू हैं बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। सिग्निफिकेंटली इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म्स इन इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड द ग्रोइंग पॉपुलेशंस। ये ज़रूरी सही है। एंड सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ फार्मर्स इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया स्टिल रिलाई ऑन द मानसून्स एंड नेचुरल फर्टिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर है, अभी भी ऐसा सही है। इसका एक्सप्लेनेशन क्या है? सिग्निफिकेंट टेक्निकल एंड इंस्टीट्यूशन रिफॉर्म ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर आर रिक्वायर्ड टू फीड ग्रोइंग पॉपुलेशंस बिकॉज ऑफ द सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ farmers in many parts of India are still rely on the monsoon rains and natural soil fertilities. Hence assertion A and reason are both are correct and R is correct explanations too. R is correct explanations too of A. So इसका आंसर डी होगा, डी नहीं ए होगा, इसमें गलत दिया हुआ, डी गलत दिया हुआ, एक्सप्लेनेशन सही किया हुआ है। Which states of India is renowned for the deposit of limestones, gypsums, salts and zincs? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात एंड पंजाब। तो बी राजस्थान। ऑलमोस्ट एंटायर प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल gypsums and zincs comes from Rajasthan. Apart from this, Rajasthan is a major producer of limestones and zincs. So एक और क्वेश्चंस मैथ्स का। 1/4 of the sum of the odd number is greater than the 14 but less than 50 is the square of the odd numbers but less than 50 is 15, 15, 17, 19, 47 to 49. Summations of odd numbers greater than 14 but less than 15 is 18 by 2. 15 plus 49 is equal to 9 into 64 is equal to 576, and 1/4 of the sum, so 1/4 is 144 and the square root 144 is 12. With reference to the Gaza strips, which of the following statement is correct? It is borders by Egypt, it is bordered by Israel. So both सही है। Gaza strip densely populated enclaves 41 kilometers long and 10 kilometer wide.
bounded by mountainous seas of one side and fenced off Israel's and Egypt's border. Its edits. Consider the following statements with reference to Uttar Pradesh Global Investor Summit. The summit was held in Lucknow. The summit was inaugurated by the President of India's. So option 1 is correct. The summit was held in Lucknow. The Uttar Pradesh Global Investor Summit was 23 was held in Lucknow. It was inaugurated by Prime Ministers, not Presidents. Thus only a statement 1 is correct. Which of the following spheres visitables places district UP is correctly matched? तो देवी पट्टनम्स, बलरामपुर, चाइनीज टेम्पल्स, वाराणसी, भवानी इंग्लिश शहीद मेमोरियल फतेहपुर, शम्सपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली। तो इसका ऑप्शन सी होगा करेक्टली मैच्ड। चाइनीज ऑप्शन सी, हाँ सी भवानी हिमालय शहीद मेमोरियल्स फतेहपुर, ये सही है और सारा गलत है। देवीपट्टनम बलरामपुर में है, चाइनीज टेम्पल वाराणसी में है, भवानी इंग्लिश शहीद मेमोरियल फतेहपुर में है और शम्सपुर बर्ड सेंचुरी रायबरेली में। क्वेश्चन 78, विच ऑफ द फॉलोइंग्स borders in order to headquarters is not correctly matched? कॉफ़ी बॉर्डर हैदराबाद, टी बॉर्डर कोलकाता, स्पाइस बॉर्डर कोच्चि, रबर बॉर्डर क्वेट्टम्स। नॉट करेक्टली मैच तो ए ऑप्शन है। द करेक्ट मैच ऑफ द बॉर्डर इन इंडियाज आर हेडक्वार्टर इज एज फॉलोज। कॉफ़ी बॉर्डर हेडक्वार्टर बेंगलुरु, टी बॉर्डर कोलकाता, स्पाइस बॉर्डर कोच्चि, रबर बॉर्डर क्वेट्टम्स। Question 79, capital and countries. Kampalas, Rwanda's, Kigali, Uganda, Kinshasa, Sudan, Khartoum's, Democratic Republic of Congo. Question option C, the capital city of countries. तो काम्पाला युगांडा में है, किगाली रवांडा में है, किंशासा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, खार्टूम्स सूडान में। क्वेश्चन 80, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नॉर्थ टू साउथ द वेरियस पासेस कॉल्ड घाट ऑफ द वेस्टर्न घाट। तो सो इसका ऑप्शन बी होगा, ताल घाट, भोर घाट, पाल घाट। The correct sequence of the Western Ghat from north to south: Tal Ghat, Bhor Ghat, Pal Ghat. Question 81, gold medalist games: Anu Rani, Parul Chaudhary, Tajinder Singh's Palak Pulias. The Anu Rani's javelin throw, Parul Chaudhary 5000 meter, Tajinder Singh tour Sujpur, Palak Pulia 10 meters pistols. Question 82, in a group of 25 people, 12 reads French, 15 read English, while 6 of read none of them. So how many of them read French and English both? तो इसका ऑप्शंस भी 8 होगा, क्योंकि the people who read French A plus B is equal to 12, people who read English B plus C is equal to 15. People who does not read French and English. From the questions first and fourth, A, B, C, D minus D is 15 minus 6 is equal to A, B, C is equal to 19. As a total people who read French and English both. Match the list of the following. Choose the correct answer using the code given below. Products districts: काला नमक राइस, प्रतापगढ़, देशी घी कुशीनगर, आमला सिद्धार्थनगर, बनाना फाइबर्स औरैया।
सो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, काला नमक राइस सिद्धार्थ नगर, देसी घी औरैया, आमला प्रतापगढ़, बनाना फाइबर्स कुशीनगर। 84. With reference to Tulsidas, which of the following statements are correct? Tulsidas was born in the village named Rajapur in Bandha districts. His wife's name is Gitanjali. So only one is true. Tulsidas born in Rajpur districts of Bandha, Uttar Pradesh. Yes, in 1532, his father's name's Atmaram Dubey and mother name was Kaushik. He married रत्नावली। ठीक है, उनकी पत्नी का नाम था रत्नावली, न कि गीतावली। मदम आत्माराम दुबे, मदर नेम्स रूल्स। If a clocks gain 4 minutes every hours, the angles traversed by the seconds hand in 1 minute will be given. Clocks gains 4 minutes in every hours. 4 minutes in every hours. 4 minutes every hour मतलब 60 मिनट। 4 by 60 होगा तो 1 by 15 minutes. The angles of 1 by 15 minutes is equal to 360. is equal to हो गया तो 24. Hence the angles transferred in the second hand is 1 hand is 360 plus 240. '86. Match list 1 and list 2 and choose the correct answer using the codes given below. Article 26, Article 40, Article 98, Article 290, 239. Article 26. Freedom of manage religious affair. Article 40. Organization of village panchayat. Article 19. Secretariat of Parliament. Article 293. Administration of Union Territory. Article 26. Freedom to manage religious affairs. Article 40. Organizations of village panchayat. Article 90. Secretariat of Parliament. Article 293. Administration of Union Territory. According to Census 2011 of India's, the percentage of urban population was 31.2 as per 2011 census. Total urban population of India is 31.16. Mountains and continent and days